हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, कॉम्प्लेक्स नंबर प्रैक्टिस सेशन, क्लास नंबर 3। ओके, तो इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन ये है। चलो देखते हैं कौन इसको कर पाते हैं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। फर्स्ट आप खुद से ट्राई करिए, देन मेरा सॉल्यूशन देखिए। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ w and z are the two non-zero complex number such that zw is equals to one non-zero complex number, okay, and the argument of z minus argument of w is equals to pi by 2, if okay, then उन्होंने बोला है कि find the complex number 10i z by w। okay, ये कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हें फाइंड करना है, ये क्या होगा। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है। इंफॉर्मेशन है z w, okay, and this is means theta 1 minus theta 2 is equals to pi by 2। okay, so z को हम ऐसे लिख सकते हैं using the Euler rules। so z is equals to z e to the power I theta 1 and w is equals to w e to the power I theta 2। okay, तो देखो now so and z bar is equals to what? Z bar is equals to what? This is x minus iy, so that's mean z e to the power I minus I theta 1। ओके, सो माइनस वन माइनस आई थीटा 1। सो अब तुम क्या करोगे, अब तुम जस्ट सिंपल z bar इंटू w मल्टीप्लाई करोगे। इसका मतलब क्या हो गया, z e to the power माइनस आई थीटा 1 इंटू mod of w e to the power I theta 2। ठीक है, so that implies z and w e to the power minus of iota theta 1 minus theta 2। okay, so this is equals to nothing but what is the value of this? This is value is 1। okay, so your that implies z bar and w is equals to 1 time e to the power minus pi by pi by 2। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज cos माइनस पाई बाई 2 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 2। सो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया माइनस ऑफ आयोटा। ओके, सो दैट इंप्लाइज 10i z by w is equals to 10i square and 2 minus 1, so it is 10 since i square is equals to minus 1। okay, तो ये था तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि तुमसे कौन सा क्वेश्चन हो रहा है या कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा है एवं कौन सा पॉइंट पे तुम अटक रहे हो, जैसे कि मैं समझ नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छे से मैं बता पाऊँ। ठीक है, तो ठीक है, तो ये था तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन तुम्हें पता चल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट तुम क्या ट्राई करो, इंफॉर्मेशन क्या क्या तुम्हारे पास है, देन तुम क्या करो, क्वेश्चंस में क्या पूछा है वो फाइंड करने का कोशिश करो। तो ठीक है, इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास ये है कि z प्लस z बार इज इक्वल टू 2 टाइम z माइनस 1, ये तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है। इसका मीनिंग क्या हो गया, एंड आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 इज इक्वल टू पाई बाई 4 है। देन तुम्हारे पास पूछा है कि imaginary part of z1 and z2, that's mean if z1 is equals to x1 plus iy1 and z2 is equals to तो ये क्या था, ये तुम्हारा z2 था। z2 if z2 is equals to x2 plus iy2, सो उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है कि y1 plus y2, इसके बारे में उन्होंने पूछा है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो ठीक है, देखो इसको कैसे किया जाता है। तुम तो फर्स्ट इस एक्सप्रेशन को ब्रेक करने का कोशिश करो। दैट्स मीन इसमें क्या पूछा क्या है, इसमें उन्होंने बोला है कि x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम x माइनस 1 प्लस आई टाइम y। ओके, सो इसका मतलब क्या होगा, ये आई वाई कैंसिल आउट, सो इट इज 2x, 2 कैंसिल आउट, इट इज x इज इक्वल टू टाइम ऑफ
x minus 1 plus iy. Okay, so that imply x square is equals to x minus 1 whole square plus y square. So that implies x square cancel out, y square minus 2x plus 1 is equals to 0. This is one information. Okay, and the second information is, and the second clue is this: argument of z1 minus z2 is equals to pi by 4. इसका मतलब क्या होता है? argument of z1 minus z2 is equals to pi by 4. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारा जो आर्गलेंड प्लान है x एक्सिस एंड इट इज अ y एक्सिस, इमेजिनरी y एक्सिस, इस आर्गलेंड प्लेन में तुम दो पॉइंट लो z1 एंड अनदर पॉइंट इज z2, जो कि ना एक लाइन के ऊपर है, सेम लाइन के ऊपर है, एंड उसके बीच में जो एंगल है, आई मीन जो x एक्सिस का जो वो जो स्ट्रेट लाइन है l, इसका जो एंगल है दिस इज पाई बाई 4. सो दिस लाइन में भी दिस और दिस लाइन में भी this is again pi by 4, maybe this line this pi by 4. Okay, so z1 and z2 every time lies in the line l1 l2 l3 whatever, तो इसी लाइन पे लाई करेगा. तो इसका मतलब तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा इधर से जो लाइन के इक्वेशंस आएगा y is equals to x plus c. दिस जो लाइन है इसका स्लोप क्या है, दिस स्लोप इज इक्वल्स टू 1, that mean theta is equals to pi by 4. So our theta also pi by 4. So the line equation is this. पर इसमें क्या लाई कर रहा है, इस लाइन पे ऊपर तुम्हारा z1 and z2 लाई कर रहा है, दैट्स मीन x1 y1 एंड x2 y2 लाइज ऑन y is equals to x plus c. इस लाइन के ऊपर तुम्हारा लाई कर रहा है. ठीक है, तो देखो, तो इधर से तुम्हें क्या हो जाएगा, इधर से तुम, हाँ ठीक है, तो y इक्वल्स टू x प्लस c. ठीक है, अब तुम ये जो तुम्हारे पास जो पहला इंफॉर्मेशन था, इंफॉर्मेशन नंबर 1 एंड इंफॉर्मेशन नंबर 2, अब put 2 in 1. Okay, एक मिनट. So x equals to y minus c. So let's suppose this is equals to 3. So information number 3 put in information in 1. Okay, so इधर से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, y square minus 2 टाइम y minus c plus 1. Plus 1 is equals to 0. So that's mean y square minus 2y plus 2c plus 1 is equals to 0. ओके, तो ये जो इक्वेशंस आया, ए भी सेटिस्फाई करेगा, z1 एंड z2 सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होगा, जस्ट y को चेंज कर दो. ओके, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसके पास कितना सॉल्यूशंस है, टू सॉल्यूशंस है, टू सॉल्यूशंस. सो वन सॉल्यूशन इज y1 एंड अनदर सॉल्यूशन इज y2. so y1 plus y2 is equals to what, आंसर इज 2. आई थिंक क्लियर टू एवरीवन ना, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं. तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए. तो जैसे कि हमें पता है कि z इज इक्वल टू, जब z के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, इसका आर्गुमेंट के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो तुम हर क्वेश्चंस में ही अप्रोच अप्लाई करने का कोशिश करोगी. z इज इक्वल टू r, दैट मीन मॉड ऑफ z e टू द पावर i थीटा, वेयर थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ z. ओके, तो ये वाला जो z का रिप्रेजेंटेशन होता है उसको तुम अप्लाई करने का कोशिश करो. तो जैसे कि इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि z माइनस वन उन्होंने ये गिवन रखा है, तो इसको ऐसे लिखो, z माइनस वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस वन ई टू द पावर आई थीटा, वेयर आर्गुमेंट ऑफ z माइनस वन इज इक्वल टू थीटा. ये लेट्स सपोज थीटा 1. So it is theta. Okay, so from here z is equals to e to the power I theta plus 1, and z minus 2 is equals to e to the power I theta minus 1. So just, but you need this one, so just divide z minus 2 divided by z. What is this? It is I theta minus 1, that is e to the power I theta plus 1. Just break down, cos theta plus I sin theta minus 1. Okay, so it is cos theta
plus I sin theta plus 1. Okay, now so cos theta plus minus 1 plus I sin theta cos theta plus 1 I sin theta. Okay, what is that formula? That formula is 2 sin square theta. So 2 here minus 2, 1 minus cos square, so it is minus. Okay, cos square by 2, so it is 2 I sin theta by 2 into cos theta by 2. Okay, divided by 2 cos square theta by 2 plus I 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. Okay, so just take common out, 2 sin theta by 2 as a common, so it is minus sin theta by 2 plus iota cos theta by 2. Okay, in denominator it is 2 cos theta by 2, so it is cos theta by 2 plus I sin theta by 2. Okay, now अब तुम क्या करो, अब तुम ये करो, so it is tan theta by 2. Okay, if I multiply by minus 1, that is minus. Okay, okay, just here is minus 1, here is iota, and it is iota squared, so it is minus cos theta by 2 minus I sin theta by 2 divided by जो है cos theta by 2 plus I sin theta by 2. Okay, now clear. So that is so minus is common out, minus 1 upon iota tan theta by 2, so it is e to the power I theta by 2, and denominator also e to the power I theta by 2, so it is cancelled out, so it is I square by I tan theta by 2 is equals to iota tan theta by 2. now क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चंस में पूछा है कि क्वेश्चंस में उन्होंने बोला कि z minus 2 by 2 z is equals to alpha iota time tan argument of z, tan argument of z. okay, ठीक है, ठीक है. So this is so that implies z minus 2 by 2 is equals to z is equals to iota half tan theta by 2. That implies what? That implies your alpha is equals to half. That implies alpha to the power 4 is equals to 1 upon 2 to the power 4. So that implies 1 upon alpha to the power 4 is equals to 2 to the power 4 is equals to 16. So your correct answer is 16. Okay, so I have cleared these questions. Okay, so next questions में हम चलते हैं this one. तो लेक्चर 1 में सेम टू आई मीन दिस टाइप का क्वेश्चंस मैंने करवाया था, तो वही आप लोग इधर इधर भी यूज करना है. ठीक है, तो क्वेश्चंस में क्या बोला है कि द 3 पॉइंट्स ए बी सी रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 respectively on the complex plane, and the angle b and c of the triangle abc are each equal to half pi minus 2. okay, so if this is equal to this, then determine it. so कुछ नहीं है इधर. so this is a abc. इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो होता है रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो ए बी सी. ओके, सो इट इज z1, it is z2, it is z3. so this is theta, this is theta. here theta is equals to half of pi minus alpha. ओके, इसका मतलब क्या हो गया? that implies AB is equals to AC. so triangle is isosceles triangle. ठीक है, तो भाई अब तुम्हें क्या चाहिए? अब तुम्हें ये चाहिए. तो रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से जो हमें पता है कि z कहते हैं कि z1 minus z2 divided by z3 minus z2 is equals to mod of z1 minus z2 divided by z3 minus z2 e to the power I theta. What is that meaning? That meaning of side length AB divided by side length BC e to the power I theta. And another one is z3 minus z2 divided by
z2 minus z3 minus z2, and then z3 minus z1 is equals to z3 minus z2 divided by z3 minus z1 e to the power I theta. So इसका मतलब ये हो जाता है कि side length of BC divided by side length of AC. Now just divide the both term, so you get z1 minus z2 z then that one z3 minus z1 divided by z3 minus z2 whole square is equals to BC is cancelled out. So not z3 minus z1. So what is the problem? Problem is just divide, so ये multiply हो जाएगा. So this is AB by BC and this is BC square. Why it is BC square? Z3 minus Z1, this is AC. So it is AB time AC divided by BC square. Okay, so now AB is equals to AC, so that implies AB divided by BC whole square. Okay, now so Z3 minus Z2 whole square is equals to what? BC upon AB whole square, and Z1 minus Z2 Z3 minus Z1. Okay, so there is Z3 minus Z1 is came. Okay, Z1 minus Z2 is okay. So all is right. So now you need to find BC upon AB, that value. So this is a triangle, na? ABC. This angle is theta. So it is 90 degree. Okay, what is the cos theta? Cos theta of, so this is the isosceles triangle. So this 90 degree point, that's means this is the midpoint of BC, middle point of BC. So it is BM divided by AB. Okay, what is the BM? BM is nothing but, so cos theta is equals to BM is nothing but BC upon 2 AB. Okay, so BC by AB is what? This is 2 cos theta. This is 2 cos theta. Okay, so your this value whole square is equals to something into 2 cos theta whole square. So this is something into, this is 4 into, this is cos theta means pi by 2 minus alpha by 2. Okay, so this is something into 4 into whole square, so it is sin square alpha by 2. Okay, so now I get the ultimate result. So that implies what is the lambda? Lambda is equals to nothing but this is equals to 4. Okay, so they say find the lambda square. So lambda square is equals to 16. So this question is based on rotation of complex number and the properties of isosceles triangle. That's it. So next question is this. Now इस क्वेश्चन से सिंपली हमें एक चीज समझ में आ जाए कि k is equals to 1 to 6 जो रन हो रहा है sin 2k pi by 7 minus iota cos 2k pi by 7, इसका वैल्यू तो अल्फा अल्फा बोला है, तो अल्फा तक को फाइंड करना है. तो इससे एक आइडिया आ रहा है कि इफ अगर x का जो अगर x टू द पावर में 7 लो इज इक्वल्स टू 1, आई मीन z टू द पावर 7 इज इक्वल्स टू 1, ये जो इक्वेशंस है
इसका जो सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस ऑफ z टू द पावर 7 इज इक्वल टू 1, क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, z ऑफ r इज इक्वल टू e टू द पावर I 2 pi k divided by 7. This is the solutions of z to the power 7 is equal to 1. So where k is running from 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So similarly here k is running from 1 to 6. ये भी तुम्हें गिवन दे रखा है, तो ठीक है। और इसका अगर तुम ब्रेक डाउन करोगे तो क्या आ जाता है, दिस इज cos 2 pi k 7 plus iota sin 2 pi k divided by 7. But in your question it is given that sin 2k pi plus I minus I cos. So this is so वो लोग एक्सचेंज करके दे रखा है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो तुम्हें गिवन जो इक्वेशन है उसको पहले दिस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। तो उसके लिए कैसे कन्वर्ट करोगे, जस्ट मल्टीप्लाई बाई आयोटा। ओके, सो आयोटा इज डिनोमिनेटर आल्सो, मल्टीप्लाई बाई आयोटा, सो इट इज iota sin 2 pi k by 7 plus cos 2 pi k by 7। देखो, तो इस फॉर्मेट के साथ अब हमारा फॉर्मेट मैचिंग हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है अल्फा का वैल्यू निकालना। तो ठीक है, तो एंड द समेशन वैल्यू इज अल्फा, सो योर समेशन k is equals to 1 to 6 is equals to अल्फा टाइम आयोटा। ओके, नाउ ये भी हमें पता है कि summation of all the solution, sum of all the solution, all the roots of z to the power 7 is equals to 0, because it is z to the power 7 minus 1 is equals to 0. What is the coefficient of z to the power 6? That is 0. So sum of roots is equals to 0. So that implies 1 plus z1 z2 plus zr is equals to z6 is equals to 0. So what is that value, that value is equals to minus 1. Okay, so your alpha I is equals to minus 1, so alpha is equals to I to the power, what is that, I square, so alpha is equals to I, so alpha to the power 4 is equals to 1. So your answer is 1. So your answer is 1. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज टोटली रिलेटेड टू इंटीग्रेशन, मीन डेफिनाइट इंटीग्रेशन। देखो, देयर इज अ फॉर्मूला इन डेफिनाइट इंटीग्रल की समेशन से, आई मीन लिमिट ओवर समेशन से हम इंटीग्रेशन में जा सकते हैं। वो क्या है फॉर्मूला की, लिमिट n goes to infinity 1 upon n summation r is equals to 1 to n or n minus 1 whatever f of r upon n, this is nothing but 0 to 1 f of x dx। ये हमें पता है, ठीक है। जस्ट यही फॉर्मूला हम इधर अप्लाई करने वाले हैं। कैसे, ऐसे, सो इट इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। Okay, so there is one n, so it is 1, it is 1 minus 1 upon n minus omega, okay, it is 1 upon n minus omega square, so that is extra 1 upon n, so that's why it is here 1 upon n plus, similarly here is 1 upon n 1 divided by 2 by n minus omega 2 minus omega square plus so on, it is 1 upon n 1 upon 1 minus
n upon n minus omega n upon n, it is 2 by n minus omega square. So it is a simplified thing. Okay, now limit n goes to infinity, it is infinity. 1 upon n is common out, this is 1 upon n. now इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करने से तुम्हें ये मिलेगा 1 upon n होल स्क्वायर प्लस 1 upon n plus 1. Okay, just simplify, you get this result. Now second one is nothing but 2 by n whole square plus 2 by n plus 1. So ऐसे करें, what is the last term? Last term is this n upon n whole square plus n upon n plus 1. This is your last term. Okay, now so L is equals to limit n goes to infinity 1 upon n, the summation is 1 upon r by n whole square plus r by n plus 1. So it is r is equals to 1 to n. What is that? That is 0 to 1, 0 to 1, 1 upon x square plus x plus 1. Since r upon n is goes to changes to x. So now your problem now changes in integration. तो अब तुम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, 0 to 1 dx divided by x plus half whole square plus 1 minus this is x square plus 2 times x into half plus 1 upon 4 plus 1 minus 1 upon 4. So it is root 3 by 2 whole square. Now इसको तुम सॉल्व करो, it is tan inverse x plus half divided by root 3 by 2 and there is a 1 upon a means root 3 by 2, so it is 2 here. So it is formula is 1 upon a tan inverse x by a होता है. Okay, this is the formula of this integration. क्वेश्चंस में क्या पूछा है? क्वेश्चन से 9l square. Now 2 root 3. Now integration is 0 to 1. So tan inverse अगर x की जगह 1 पुट करोगे तो 2 कैंसिल आउट, इट इज 1 upon 3 root 3. ओके, माइनस tan इनवर्स अगर 0 पुट करोगे तो 1 पुट करोगे तो 1 नहीं अगर 1 पुट करें तो 1 2 3 3 by 2 2 कैंसिल आउट 3 root 3, सॉरी इट इज root 3 एंड 0 पुट करोगे तो ये बचेगा 1 upon root 3. So 2 upon root 3, what is that value? That value is 60 degree, that is pi by 3 minus 6 आ गया pi by 6 का होता है. So pi upon 3 1 minus pi upon 3 1 minus 1 upon 2, that is half, that is half into 2 by root 3 into pi upon 3. So it is 2 to cancel out, so pi upon 3 root 3. So your 9l square is nothing but 9l square is a pi square by pi by 3 1 minus 1 upon 2, it is half is 1 outside, so it is pi square divided by 9 pi square by 3. So your answer is pi square by 3. So your answer is pi square by 3. ओके, तो ये क्वेश्चन को ऐसे करना था. तो अगर हम इस क्वेश्चन को करें ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ये क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एरिया ऑफ द रीजन फॉर्म्ड बाई z is less than or equal to 4 and minus pi by 2, argument of z is less than or equal to pi by 3. okay, इसका मतलब क्या होता है देखो. okay, so draw the first graph. This is a circle, this is a circle. okay, so this is a circle. okay, okay, now argument of z is lies between minus pi by 2 to, मतलब जो z है, जो z इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो z इसको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा. और कब करेगा? जब
this is -2, this is pi by 3, this is pi by 3, this is -pi/2। अगर z तुम्हारा इसमें लाई करे तब तुम्हारा both both equations will be satisfied by z। okay, so they say कि the region bounded by this area find करो, इस रीजन का तुम्हें भी एरिया चाहिए। ठीक है, what is the area of that region? What is the area of that region? This is nothing but pi square pi r square pi r square by 4, because the each part, this part, this part, this part, this part, each part is equal। okay, area is equal, so it is pi by 4, so it is pi time r square means r means 4, so r square means 16 divided by 4, that means this is 4 pi, this area। now you need to find that area। okay, so there is another formula, if you know the theta and you know the r, in that case, so area of the line sector, this is called sectors। okay, the sector area is equals to half r square theta, this is the sector area। okay, so what is that? This is half into 16 into what is the theta? Theta is pi by 3, so your 8 pi by 3, so your total area is equals to 4 pi plus 8 pi by 3, so it is 12 into 20, 25 by 3, so your answer is this। okay, I hope clear to all। okay, now next questions। हाँ, ये जो क्वेश्चंस है इसमें मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, सो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दिस इज 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, where a b c d belongs to real number, and they say this biquadratic equations has 4 non-real root। इसका मतलब क्या हो गया? दैट्स मीन 4 complex root। complex root, okay, if one root is, if this is the alpha is the one root, that implies alpha bar is another root, because we know fundamental theorem of algebra says कि कोई इक्वेशन पॉलिनोमियल का अगर x is a, I mean a complex number is the solution, that's mean root, then conjugate of that complex number is also a root of this same polynomial, so that's why alpha bar is another root। okay, if the beta is root, that implies beta bar is another root। okay, now according to the questions they say कि sum the roots, okay, to sum with 3 plus 4i and another to sum in another to if the product is 13 plus i। okay, now अगर तुम, okay, alpha plus alpha bar is always real part of alpha, so it is never 3 plus 4i, so you have the given that alpha plus beta is equals to 3 plus 4i, ये तुम्हें given है। ठीक है, now again product of 2 is 13 plus i, alpha into alpha bar or beta into beta bar is never be 13 plus iota, because this is a real number, this is a real number, so they given that alpha beta is equals to what, 13 plus iota, ये तुम्हारा पास गिवन है। ठीक है, okay, now what is the total summation? Alpha is equals to plus minus, so it is minus a, that implies alpha plus alpha bar plus beta bar is equals to what, माइनस है। तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें ए बी सी डी का तुम्हें वैल्यू फाइंड करना है, कैसे करोगे? ऐसे करोगे, देखो, ओके, तो इधर से ये क्या आ गया, माइनस ऑफ ए इज अल्फा प्लस बीटा, ओके, प्लस
अल्फा प्लस बीटा इसका होल वर्ग। सो अल्फा बीटा क्या था, अल्फा बीटा था तुम्हारा 3 प्लस 4i plus 3 minus 4i, so 4i cancels out, so it is equals to 6, so that implies your a is equals to minus 6, so your option B is correct. Okay. Now find the b, find the d, b and c. What is the d? That's mean plus minus plus minus plus, so your d is plus, so d is equals to alpha beta and alpha beta, yeah, product of all the roots. Okay, here you have alpha beta. What is the alpha beta? Alpha beta is 3 plus 4 13 plus I, so it is 13 plus iota. So what is that? 13 minus iota, so 169 plus 1 is equals to 170, 170, so your B option is also correct. No B and C, no B and C. What is the B? B is equals to summation of alpha beta. That's mean alpha beta plus alpha bar plus alpha beta bar plus alpha beta bar. Okay, so it is Q alpha bar. You have the four roots. So alpha with this and this. Okay, now beta into alpha bar plus beta into beta bar plus alpha bar beta bar. So this is your whole terms. Okay, now observe. Okay, what is alpha beta? Alpha beta is 13 plus iota plus I put just this value and take here, and here is alpha bar is common, so it is alpha plus beta. Take here and here, beta bar is common, so it is alpha plus beta. Now this value is 13 minus iota. Okay, so 13 plus iota, so iota is cancelled out, so it is 26 plus alpha bar plus beta bar, alpha plus beta. Okay, so ये 26 हो गया plus what is that? That value is 3 plus 4i, so it is 3 minus 4i, 3 plus 4i. Okay, so this value is 26 plus 9 plus 16, so it is 25 and 51, so your d value is 51, d value is 51. Similarly check c is this or not. Okay, I am not checking, तो ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. इसमें भी मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट. सेम इसमें भी हमें z पता नहीं है, z का एम्पलीट्यूड पता नहीं है, सो हम ऑयलर थ्योरम यूज करेंगे. सो z1 इज इक्वल्स टू e to the power I theta 1, that means e to the power I theta 1. z2 is equals to e to the power I theta 2. Okay, now you have amplitude z1 z2 is equals to 0. Amplitude means argument. Okay, don't worry. So z1 plus argument of z2 is equals to 0. So this is theta 1 plus this is theta 2 is equals to 0. That implies theta 1 is equals to minus theta 2. Okay, so now I am just cross checking. Z1 plus z2 is equals to what? E to the power I theta 1 plus e to the power I theta 2. So it is cos theta 1 plus I sin theta 1 plus cos minus of theta 1 plus I sin of minus of theta 1. So this term is cancelled out, but this term and this term is never cancelled out. So it is may or may not be 0. So options A is false. Now options 2, Z1 Z2. So it is the word I of
I1 plus theta 1, theta 2. So e to the power I into 0. What is that value? That value is 1. So option B is correct. Okay, now option number C. Z1 is equals to Z2 bar. ये true है या नहीं? What is Z2? Z2 is e to the power I theta 2. What is Z2 bar? E to the power minus I theta 2. What is that? That is equals to e to the power iota minus Z2. That's mean e to the power iota Z1. I mean theta. Sorry guys. So this is e to the power minus theta 2 iota. So e to the power iota theta 1. So this is equals to Z1. So Z2 bar is equals to Z1. This is true. No. Z1 is equals to Z2. No. This is not. No. Next question. This one. First try yourself. Okay. देखो. Z1 plus Z2 whole square is given Z1 whole square plus Z2 whole square. तुम्हारे पास पूछा क्या है? तुम्हें पूछा है क्या Z1 by Z2 के बारे में, इसके बारे में तुम्हें पूछा है. तो concept is Z is real. That implies what? That implies Z plus Z bar is equals to Z plus Z real. That implies x y is equals to 0. That implies Z is equals to Z bar. Z equals to Z bar. So अगर तुम्हें Z is equals to Z bar होगा तब तुम्हें Z real मिलेगा और Z is imaginary. That implies when होगा, कब होगा ये? जब तुम्हें Z plus Z bar is equals to 0 मिलेगा. अगर तुम्हें ऐसा कंडीशन हो जाए तो क्या हो जाएगा? Z is purely imaginary होगा. अगर पहला वाला कंडीशन हो जाए तो Z क्या हो जाएगा? प्योरली रियल नंबर हो जाएगा. सेम कॉन्सेप्ट हम इसका ऊपर अप्लाई करने वाले हैं. सेम कॉन्सेप्ट वी विल बी अप्लाई ऑन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 by Z2. इस Z1 by Z2 कहां से आएगा? इधर से आएगा. चलो देखते हैं. What is that formula? That formula is Z1 square Z2 whole square plus 2 times Z1 Z2 bar, not 2 times Z2 Z1 bar is equals to Z1 whole square Z2 whole square. So this term is cancelled out. So ठीक है. तो Z1 Z2 bar is equals to plus Z2 Z1 bar is equals to 0. तो options number C is already correct. Options number C is already correct. Okay. Now next. अब हमें A B C के बारे में पता होना पड़ेगा. तो Z1 Z2 bar is equals to minus Z2 Z1 bar. Okay. So Z1 by Z2 is equals to minus Z1 by Z2 whole bar. Okay. That implies Z1 by Z2 plus Z1 by Z2 whole bar is equals to 0. तो ये वाला कौन सा कॉन्सेप्ट है? This concept is that one. So Z is purely imaginary. So Z1 by Z2 is purely imaginary. So which one is correct? Purely imaginary means option number B is correct. A is wrong. Now what about the amplitude of Z1 Z2? देखो जो Z है तुम्हारा प्योरली इमेजिनरी. इसका मतलब क्या हो गया? Z इक्वल्स टू आयोटा समथिंग y. ओके. सो xy प्लेन में ये जो y है ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं. सो अगर तुम्हारा पॉइंट ये होगा 0,3. सो अगर 0,3 होगा सो दैट मीन्स Z इज इक्वल्स टू 3 आयोटा. ओके. व्हाट इज दैट एम्पलीट्यूड? दैट वन. सो पाई बाय 2. अगर तुम्हारा Z इज इक्वल्स टू हियर होगा 0,-3 0,-3. So your Z is -3 iota. In that case, your amplitude is minus pi by 2. So similar concept apply on Z1 and Z2.
this is something I into y because z1 by z2 is purely imaginary. Okay, so this happens, so that implies amplitude of z1 by z2 is maybe pi by 2, maybe pi by 2 or minus pi by 2, maybe. So options number D is correct. Okay, now these questions. Now एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. The question asks about the principal argument of. उससे पहले हमें z को फाइंड करना पड़ेगा. z x plus i y में हमें z को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. देन हमें पता चलेगा कि उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है क्या. तो उसके लिए देखो, एक जस्ट एक लिटिल ऑब्जर्वेशन. 1 plus 2i 1 plus 3i dot dot 1 plus ni 1 minus i 2 minus i. इसी टाइप के क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन में मैं जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ वो मैं पहले बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ. तो देखो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस. तो अगर मैं डिनोमिनेटर में मैं आई से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा. 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा आई गेट. सो दिस इज होल टर्म इज 1. तो मैं जस्ट इसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज कर. ओके, सो फ्रॉम हियर we get iota, from here we get iota, from here we get iota. हर एक रेशियो से हम हमें क्या मिलता जाएगा आयोटा, बिकॉज हमने ऊपर आयोटा से मल्टीप्लाई किया. सो देन पता चला कि द बोथ रेशियो आर इज इक्वल टू 1. ओके, so how many time iota is n time, so it is I to the power n. So your z is nothing but I to the power n. Okay, now put n is equal to 0, that implies z is equal to 1. Okay, so if z is equal to 1, what is their amplitude, what is their principal argument? It is 0. It is 0, so option C is true. If z is equal to 1, in that case z is equal to iota. That's mean, what is that amplitude? This is lying here on the y-axis, positive y-axis. So amplitude is theta is equal to pi by 2. So option B is true. Okay, if then if n is equal to minus 1, n is equal to 2, in that case z is equal to minus 1. So amplitude is theta is pi. So option D is true. Similarly option C also be true. तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना होता है. ओके, तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ही आएगा. आई होप नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ समथिंग पीवाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाला हूँ. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.